You're listening to Heart with Saima. I come to you every Thursday from 1 to 2. How is everyone doing today? It's a beautiful, beautiful day in Dallas. And मैं आपके पास जब आती हूँ on Thursdays. So I come to you bringing my heart on a platter. क्योंकि मैं बातें करती हूँ basically about things which are happening in my world and things which are happening in my life and things that I am truly passionate about. And, whether that has to do with real estate or it has to do with heart to heart, touching lives of people. Um, मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये नज़रिया है, मेरी ये सोच है कि जब इंसान अपने आप को अ, बिल्कुल एम्ब्रेस करने को तैयार होता है, रेडी होता है, you're ready to embrace yourself with all your faults and all your pluses and all your minuses, which means that you accept the fact that you are an imperfect person. And as an imperfect person, you are ready to embrace all your own faults and your fallacies and your goodness and your. Personally, I feel that जिंदगी जो है वो परफेक्ट तो है नहीं और हम जितने इस दुनिया में लोग हैं हम सब बिल्कुल यूनिक इंडिविजुअल्स हैं एंड द रीजन वी आर यूनिक इंडिविजुअल्स इज बिकॉज वी आर मेंट टू बी वेरी यूनिक. हम सबका डीएनए डिफरेंट है, हम सबका हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आर ऑल अ बाय प्रोडक्ट ऑफ different genetics, of different environment, of हमारा जो भी माहौल जिसमें हम पले बड़े हैं, हमारी जो हमारे दोस्त ज़िंदगी में आते हैं, जो तरबियत हमारे माँ-बाप हमको देते हैं, जो जिस रिलिजन को हम लोग फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जिस कल्चर का हम हिस्सा होते हैं, तो वी आर बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एंड तो हम we are a composition, we are composed of so many different attributes, so many different belief systems jo hum logon ko at the end of the day they make us what we are. And I think to top it all off, one of the most important aspects of our individuality is the fact that हम अपने आप को किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं, हम अपने आप को किस तरह से एम्ब्रेस करते हैं, हाउ डू वी feel about ourselves and the love we feel for ourselves or the guilt or the different plethora of emotions जो हम अपने खुद के अंदर feel करते हैं. Growing up um, आपके environment के अंदर, how are you made to feel about yourself? Are you told that you're not good enough? Are you told that तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं? Are you told तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयां हैं? Are you always compared to your siblings? Are you always compared to your cousins? Are you always compared to other people? Are you always told that तुम अच्छे नहीं हो या तुम बुरी हो या तुम इस जैसी नहीं हो या तुम उस जैसी नहीं हो? डोंट टॉक टू मच, तुम बातें बहुत करती हो, तुम किसी की बात नहीं सुनती, तुम रूल्स फॉलो नहीं करती. So we are basically a byproduct. We are created by all these different things. मगर जितना हमारा environment हमको बोलता है, हमें embrace करता है, like with all our choices,
जितना आप खुद अपने बच्चों को embrace करेंगे with all their choices, and you tell your kids that, hey, you know what? I love you unconditionally. I love you for who you are. I love you with all your perfections and imperfections. And when you do that, you raise and you build strong individuals and strong beings. मगर जब आप constantly, अगर आप अपने खुद के ही बच्चों के अंदर अगर हर वक्त नुक्स निकाल रहे होते हैं, and you're thinking कि हमने ये देखा है, right, society के अंदर कि everyone loves those kids जो हर वक्त सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो they do everything that they are being told to do, right? Obedience is appreciated in our society. But when we don't embrace individuality, agar koi bhi wants to be their own character, wants to be whoever it is, right? जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मुंह फट भी होते हैं, जो बच्चों को बोलना होता है वो बोल भी देते हैं, वो बारिश में भी नहा रहे होते हैं, वो नंगे पैर भी फिर रहे होते हैं, वो जो अगर उनको टैंट्रम है तो वो जमीन पे लेट के and they throw a tantrum as well, right? So they are able to express themselves instead of keeping everything inside. And that right there makes a huge difference, because when we carry everything internally, हम अपने दिलों के अंदर ये बोझ लेके फिर रहे होते हैं कि हम इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें डांट पड़ेगी, हम वो नहीं कर सकते बिकॉज इससे लोग क्या कहेंगे, वो बचपन से ही हमारे अंदर इंस्टिल होना शुरू हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। एंड वो जो एक चीज है कि लोग क्या कहेंगे, that right there ends up becoming a big problem. So that is a huge problem, and that is not how it is supposed to be, because we should be allowed to embrace who we are. We should be allowed to become who we are meant to be. And that is never easy, but that is meant to be the essence of our life. You're listening to Heart with Saima. I come to you every Thursday. This is Radio Caravan. मैं हर थर्सडे को आती हूँ फ्रॉम 1 to 2। आप लोग मुझे मिलते हैं, डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं। You appreciate what I do. You are able to follow me on social media. I am whether मैं इस वक्त YouTube पे live हूँ, अगर आप मुझे YouTube के ऊपर follow करें, you can listen to the whole radio show at your leisure. Wherever in the world you might be, you are able to listen to us from anywhere you are. If you follow me on Facebook, I am streaming live on Facebook right now under Saima Malik Dillon. In multiple different places, I'm streaming live right now. For women, I would love for you to follow me on my women empowerment group, which is called Women of Noor. The acronym for that is WON for one. So अगर आप one search करें और अगर आप मेरा नाम search करें, Saima Malik Dillon, and you go on and you know look in my profile, you will see Women of Noor, and send me a request. Join my women empowerment group. This is for women, and that's what we do. We are all about diversity. We are about inclusion. We are about empowerment. We are about building each other. Why itni badi dunya, itni opportunities. There is so much out there to embrace. We don't need to be in competition with each other. We can be our individual self, follow our own aspirations and goals, and at the same time, we can be out there for each other, and we can build each other, and we can lift each other, and we can support each other, so that together, kande se kanda milake, ek dusre ki energies milake, we are just so much more strong and so much more powerful. And so you're listening to Saima on Radio Caravan, and
We believe in touching lives. आप दुनिया में कहीं से भी you are able to follow me on social media. By profession, I'm a real estate agent. I do real estate, commercial real estate. मैं करती हूँ, मुझे 19 साल हो गए हैं real estate करते हुए. You're able to, अगर if you're out there looking to buy, sell, or invest in residential or commercial real estate, please do reach out to me. You're able to contact me at 972-244-3106, 972-244-3106. You're able to send me a message. Please do let me know what it is that you're looking for, because I do not answer unknown numbers. So 972-244-3106. You're able to email me from anywhere in the world at VIP, like Victor, India, Papa, at Saima Dillon, SAIMA, SAIMA, DHILLON, .com. So VIP at SaimaDillon.com. You're able to reach out to me. Let me know what it is that you're looking for. I personally feel that, you know, life can be very hard. I feel it is so important. हमेशा इंसान में सेम एनर्जी नहीं होती, हमेशा इंसान में सेम ताकत नहीं होती है. I think everyone should be a real estate investor. Everyone should be investing in real estate and building their real estate portfolio. When it comes to being a real estate investor, there is such a wide variety of different aspects of real estate that you're able to get into as an investor. So it doesn't just have to be, कि आप commercial real estate करें. अगर आप commercial real estate में भी करते हैं, तो whether it's you want to have an event center to host events. And on that note, I do have an event center. It is a small event center in the city of Aubrey. It is around. It You can host up to 185 people in that small venue. It does have a 5,000 square feet gorgeous house as well. These are 25 acres land. 25 acres land के अंदर around 15 acres are in floodplain. The the property is beautiful. It's located close to 380. Maybe around 7-8 minutes from 380. So it's a property that you're able to use the house as an Airbnb or VRBO, and you're able to use the event center as well. If you are looking for land, you're in real estate development, please do reach out to me. There is a land that is off market. It is in Princeton, 117 lots to build townhomes. And if that is something that's your forte and that is something that might be of interest to you, please do reach out to me. 972-244-3106. Like I said, agar commercial real estate is not your cup of tea, so I think even as individuals, when your kids go out to colleges, help them become a property manager and manage their own property. Help them with the down payment money and help them buy their first investment property. Help them become real estate investors at that young age of being in your 20s, so that my, the way I look at things is that everyone should have at least a few. Agar single family homes is your cup of tea, then everyone should have a few single family homes which you should rent out. If you help your kids become real estate investors and they are in colleges, they are living on college campus, you help them buy a 3 bedroom, 2 bath house. They live in one of the rooms, they rent out the other two individual rooms to people who are studying, to basically give them the ability to be able to generate passive income from it, and they turn into real estate investors. They are managing these properties. At the same time, they are making money to help pay the mortgage. So it helps them, it teaches them responsibility, it helps them become independent, it helps them get involved in the game of real estate investment at that young age. The goal is within 15 years' time, you should have 4 to 5 paid off properties, which, when they are paid off and are generating you passive income,
then you have ten to $15,000 coming to you on a monthly basis, which means that you just don't have to work to make ends meet. You have income coming in. It gives you the ability to be self-sufficient and to even become an entrepreneur if you choose to do that, because you do have a certain amount of income that is coming into you. So becoming a real estate investor, it's not just सिर्फ एक नजरिया नहीं है. आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं. एक अलग अलग तरीके हैं. मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आप जा सकते हैं. मुख्तलिफ चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. So you're able to build passive income for yourself, and you're able to live a life that is a life that you choose to live, a life of I feel freedom. Having said that, I will also tell you that this is not, this is not, it's not, when you're an entrepreneur, even when you're a real estate investor, as an entrepreneur, एक जिम्मेदारी होती है. You're an entrepreneur, you're a business person, you're self-employed. किसी भी point के ऊपर, if you decide to go out there and buy your first house, right? You buy your first home, you have to have a certain amount of money sitting in the bank, so that if you don't find a tenant and you have to make your mortgage payments for a few months, or different things can happen. Market change hoti hai. Jaise in the past few years, we have seen the market change. We have seen it go from where, ghar hi nahi mil rahe the for rental, to where there are homes right now. The reason Dallas market is going relatively stable is because there are not a whole lot of homes for sale. We are in October, November, December. These are slow. This is the slow time for real estate, because abhi, हम जब November शुरू होता है, तो we go into Thanksgiving. Thanksgiving के बाद we go into Christmas. We go into New Year's. So this is basically a time where everything starts to slow down, and it's a hard time. So agar is point ke upar, which is something that did happen to a investor client of mine. They had bought a house, and in between the lease, it was bought at the right time, it was leased for the right price, but in between, koi 8 months, 7 months down the road, the tenant who was living in that property with his girlfriend, unke beech mein issues hue, and they ended up ending their relationship. When they ended the relationship, एक पॉइंट के ऊपर जब वो मिलके रेंट दे रहे थे, तो उस पॉइंट के ऊपर, the, the the woman moved out, and he was having difficulty with making the whole payment by himself. So at us point ke upar, we had to go through a process where we had to terminate the lease, and then we had to get the property ready again, and then we had to put the property back on the market for it to be leased. तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें होती हैं, एंड दिस इज ये वो प्रोसेस है. इट्स अ पेनफुल प्रोसेस. पेन पॉइंट्स जो आपके ट्रिगर होते हैं. मगर वंस अगेन, अगर आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप बिजनेस के अंदर जाते हैं, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज. सो कपल ऑफ वीक्स बैक जब मैं शो कर रही थी, और जब मैं रेंटल प्रॉपर्टीज की बात कर रही थी, तो I had someone who called and he said कि आप पेन पॉइंट्स भी डिस्कस करें, एंड दैट is one of the reasons कि अब मैं जब भी रेंटल्स की बात करती हूँ, I always do like to point out the pain points. Now वो लोग भी हैं जो they go out and they borrow money from hard money lenders, and they go and they buy that first property and they fix it up and they're wanting to flip it. तो उनके लिए कभी चीजें वर्क करती हैं, कभी उनके साथ भी ये होता है कि वो प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करते हैं, बट दैट प्रॉपर्टी दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम सेलिंग द प्रॉपर्टी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप बिजनेस में होते हैं, तो वो वक्त भी आता है जिधर गेन्स भी होते हैं और जिधर लॉसेस भी होते हैं. So, as an entrepreneur, you have to be ready to be able to manage whatever comes your way, to be able to deal with. इसलिए having a reserve of money in the account
is absolutely imperative so that it helps you sustain and it helps you get through the hard times. एंड जिस तरह जिंदगी चलती है, जिंदगी की ऊंच नीच चलती है, जिंदगी में हार्डशिप्स भी आती हैं, जिंदगी में वो खुशियों भरे लम्हे भी आते हैं। तो जिस तरह जिंदगी में ऊंच नीच, हाइज लोज हर तरह आते हैं, वो सब चीजें बिजनेस में, काम में, वो ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं। और जब डिफिकल्ट मोमेंट्स भी आते हैं जिंदगी में, तो वी डील थ्रू दैट एज वेल एट द सेम टाइम. And that is what life is all about. It is 1:24. You're listening to Heart with Saima. I come to you every Thursday. You've been listening to me almost for, I think, almost 2 years on the radio. And मैं जब भी आती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बात और अपनी जिंदगी के हाइज लोज शेयर शेयर करूं. एंड आई ऑलवेज टेल यू, मैं किसी दूसरे तक तो जाने की जरूरत की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि अपनी इस जिंदगी में आई हैव सीन हाइज, आई हैव सीन लोज. एंड इवन व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, हाइज भी देखे हैं, लोज भी देखे हैं, फिर हाइज भी देखे हैं, फिर लोज भी देखे हैं. तो आई थिंक जब तक हम इस जिंदगी में हैं और जब तक वी आर alive and kicking, we go through all these different experiences of life. And I think जिंदगी जब आपको नॉक कर रही होती है, and you feel that, oh my god, I'm overwhelmed and I feel कि everything is falling apart, perhaps that's also an indication that change is needed. um, 5 minutes में we are going to head to our first break. And when we head to our first break, and I come back from the break, I'm going to be talking about something that I was listening to, and something that I have been working on and trying to implement मेरी खुद की जिंदगी में. um, you know मेरी खुद की जिंदगी का ट्रैक चेंज करने के लिए, things that I have been seeking and I have been working on, and that I have been trying. So वो I was listening to something very, very, very interesting. And so that's what we're going to talk about when we return from the break. So this is Heart to Heart with Saima. You're able to, if you are out there looking to buy, sell, or invest in real estate, 972-244-3106. Please follow me on social media. वो चाहे आप LinkedIn के ऊपर हों, आप YouTube के ऊपर हों, आप Instagram के ऊपर. इस वक्त I am streaming live on Instagram, but I do disconnect Instagram at at 1:30. ये जो अगले 2 मिनट में I will disconnect Instagram, but I'm still streaming live on LinkedIn and YouTube and multiple places on Facebook. And I would love for you to follow me. For people who are listening on the radio, please do follow me. अगर आप social media पे हैं, go on there, follow me. Join for women. Please do join Women of Noor, which is under the acronym WON, for Women of Noor. So WON, please do join me over there. And the group is all about empowerment and building each other and uplifting each other, because I am a total believer that we don't need to be in competition with anyone. अगर किसी के साथ हमें compete करने की ज़रूरत है भी और feel भी होता है, तो we should be in competition with ourselves, ताकि जो हम आज हैं या हम जो कल थे, tomorrow we can be better than what we are today. And if हमें competition करना ही है, so then that's where the competition should be, with ourselves. And it doesn't need to be with anyone else, because there's enough out there for everyone, for us to be cutthroat and for us to compete with each other. So having said that, with the real estate, Dallas market is one of those real estate markets which has been doing, it has been sustaining through everything that the economy is going through.
outside conditions like what is happening with what is happening in Gaza, different things. उससे पहले, few months पहले, what happened with Russia and Ukraine. All these things have an impact on these things, that catastrophes that happen in the world. इन सब चीजों का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के ऊपर होता है, and it impacts us as well. When it comes to the Dallas market has been sustaining just fine, and the reason it has been sustaining is because there is a lot there's not a lot of inventory out there, which means when there's not a lot of inventory, there, demand and supply के perspective से, जब आप इसको when you view it from that perspective, उस नजरिए से जब आप देखते हैं, तो जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मार्केट जो है वो बैलेंस के अंदर रहती है. बिल्डर्स आर मेकिंग लेस होम्स, बट देन इवन बिल्डर्स, if you are in the market looking to buy looking to buy a home, there are several builders who are offering interest rates which is around. Once again, the tradition of Kolkata is brought to Dallas in its full glory to kick off this year's food show. The talented music and vocal team of PAW. Okay, so Instagram, thank you for being for watching. I'm going to go ahead and disconnect Instagram. Steeped in the deep-rooted traditions, rich Bangla culture, and festivities of Durga Puja, the art of the celebrations. Highlight of the 3-day grand celebrations are the celebrity concerts, showcasing one of the most mellifluous voices in Indian cinema, Kavita Krishnamurthy, on October 20th. Playback singer rockstar Trijoy on October 21st, and National Award-winning singer Iman Chakraborty on October 22nd. For timings and tickets, please visit badfw.org. चलो, তাহলে দেখা হবে। There's a lot of multitasking जो चल रही होती है. So Jack can assist in selling your commercial properties and investment land. Call today and get a free valuation. And don't forget, Jack's team of residential realtors can help you buy or sell your home. Experienced realtors are ready to help you find exactly what you're looking for. Visit godwanirealty.com or call 972-693-3286. okay, so we have let's see, we have Tune in to the Real Estate and Business Hour live on Saturdays at noon, only on Radio Caravan. we have around a minute before we go. Please mark your calendars for the upcoming Rajya Panorama on October 28th. Exciting lineup. We are super excited to have Arun Krishna, CEO IBM, as our keynote speaker. Also joining us will be Nadine Goyal, CEO USA, Siva Sibram, Chairman AP USA. To add a little pizzazz to the evening, we will have Canadian Raj Sharma joining us, as well as musician Sumit Chandra. There will be a fabulous evening. Please do join us. Enjoy yourself. Only $20 to charge for a year. See you at Gala. Thinking of visiting Dubai? Welcome on board. Emirates Airlines flies from BMW to Dubai and beyond. With advanced HEPA air filters, you can be sure we put your health and safety first when you fly with Emirates. Lawson Travel at 214-631-2458 for complete schedule to book your flight today. Welcome to Skin Med Spa and Laser, where they offer the latest in laser hair removal technology. Say goodbye to the hassle of shaving, waxing, and plucking with their safe and effective laser hair removal treatments. Skin Med Spa and Laser experienced technicians use state-of-the-art equipment to target Okay, so smooth, silky skin, and with their affordable pricing and flexible scheduling. It's
never been easier to achieve the look that you want. So why wait? Book your appointment today at either of their convenient locations in McKinney, Frisco, or Castle Hills, Carrollton offices and experience the freedom of laser hair removal at Skin Med Spa and Laser. Call now at 214-935-9697 to book a free consultation. Welcome back. You're listening to Heart with Saima. मैं आपके पास आती हूँ हर थर्सडे को और I come to you and we talk about different things under the sun. We talk about things that I feel very passionate about, and we talk about things कि हम इस ये जो हमारा जिंदगी का सफर है जो कि it's not a easy journey. एंड इस सफ़र में हम हमारी जद्दोजहद जो है हमारा कांस्टेंट एंडेवर्स we are constantly endeavoring and we are constantly trying and we are constantly building towards a better life and you know अलग अलग challenges आते हैं अलग अलग चीज़ें आती हैं um, हम हमारा जो सफ़र है इट इज़ मेंट कि हम हमेशा कोशिश करते रहें हम कोशिश करते रहें टू बी बेटर हम कोशिश करते रहें टू टू constantly evolve and be in a different place मुख्तलिफ चीज़ों के साथ experiment करके मुख्तलिफ चीज़ों को try करके and we are so that we can be in a place that is a better place so or बेटर क्या हो सकता है आज जो हमारे लिए चीज वर्क कर रही हो वो हमारे लिए कल वर्क नहीं करे और अगर कल वो चीज वर्क नहीं करेगी तो मे बी दिस इज ये उस चीज की शेल्फ लाइफ दिस इज व्हाट द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट रिलेशनशिप और दैट एक्सपीरियंस वो चीज एक जगह के ऊपर आके खत्म हो गई है बट व्हेन वी कीप ट्राइंग टू ड्रैग थिंग्स ऑन एंड वी डोंट वांट थिंग्स टू चेंज एंड हम उसी स्पेस के अंदर अपने आप को रखते हैं तो हम काइंड ऑफ उस पानी की तरह हो जाते हैं जो एक ही जगह पे पानी खड़ा हुआ है और वो वहां पे खड़ा हुआ इट बिकम्स स्टैग्नेंट उसके उसकी वो एक चार्म उसकी वो एक जो एक रौनक उसमें होती है वो एक खत्म हो जाती है जब भी वो जो पानी जो एक मूविंग वाटर होता है जो एक दरिया की तरह या स्ट्रीम की तरह
जो होता है और जिसके अंदर हर वक्त मूवमेंट रहती है, वो पानी भी साफ सुथरा होता है, एंड दैट पानी वो है जो आप अगर आप हाइकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आप उस पानी से भी पी सकते हैं, बिकॉज इट्स सपोज टू बी क्लीन वाटर। एंड आई थिंक हम इंसान भी उसी तरह है कि अगर हम एक ही जगह पे ठहरे रह जाते हैं तो हम वहां पे ही कीचड़ बननी शुरू हो जाती है, वो पानी इतना साफ नहीं रहता। इट्स नॉट एस इट्स नॉट ड्रिंकेबल एनी मोर। तो वी नीड टू बी लाइक अ रिवर, वी नीड टू बी लाइक एक दरिया की तरह जो हर वक्त फ्लो करता जाए। एंड जो रुकावटें बीच में आए, यू टेक दोस इन योर स्ट्राइड एंड यू think, okay, you have to find solutions to those issues, and you figure that out and you keep moving forward. So we're going to touch a little bit about how किस तरह से जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, अगर हम अब उन सोचों से हमारा दिमाग जो है, इट्स सच अ पावरफुल टूल कि जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों से हमारी तकदीर बन रही होती है। Again, if you know me, I do not talk about religion. I don't know a whole lot about politics. मेरी जो कोशिश होती है वो it's always just digging in, and from a I'm looking for logic, I'm looking from a philosophical perspective. And there's someone that I listen quite a bit to, and that is Dr. Joe Dispenza. And इस वक्त जो अगले हमारे जो 20 मिनट निकलेंगे, it's based on where he says कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, so you need to take a piece of paper, and you need to write down exactly each and everything to the minutest detail कि आप क्या अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड देन जब आप उस चीज को एक दफा लिखना शुरू कर देते हैं, तो देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट, यू लेट इट गो, एंड यू वेट कि वो जो चीजें आप सोचते हैं, यू वेट फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू राइट डाउन फॉर इट टू कम इन टू फ्रूएशन। लेट एवरीथिंग कम टू यू। And when you start to do that, it means that you are no longer the program now. You are that कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदरूनी, जो हमारी एक सोच है, जो उस प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रही है, जो हमारी सोच है और जो हमारे जज्बात हैं और जो हमारी फीलिंग्स हैं, दे आर बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हम आज जिंदगी में जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, वी आर बेसिकली, हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जिधर हमारी पिछली पूरी जिंदगी की जो भी सोचें मुख्तलिफ हमारी लाइफ में आई हैं, जो हमारे तजुर्बे के हिसाब से हम, वी आर अ बाय प्रोडक्ट, एंड that's where we are right now. We are the end product of past experiences, and you feel the same. If you feel the same way every single day, that means that जिंदगी के अंदर अगर आप एक ही चीज सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे, इट मीन्स, और किसी नई सोचों को आप अपनी लाइफ के अंदर आने नहीं देंगे, तो आपकी जिंदगी में तब्दीली किस तरह से आएगी। सो एज लॉन्ग एज यूर थिंकिंग इक्वल टू जो भी आप जिस माहौल में भी रह रहे हैं, जो भी आपका सराउंडिंग है, तो आपकी जिंदगी उसी हिसाब से चलती रहेगी। On a daily basis, 60 to 70,000 thoughts, 60 to 70,000 thoughts on a daily basis cross through our brain on a daily basis. Or 60 to 70,000 thoughts ke andar se, science has shown that 90% of the thoughts that you think about, they are the same thoughts that you think about on a daily basis. So, if you believe that your thoughts are somehow connected to your life, कि जो चीजें आप सोचते हैं आपकी जिंदगी उसी हिसाब से चल रही होती है, so then you continuously keep making the same choices, and the same choices keep leading to the same behavior। हम उसी तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, हम उसी तरह
तो तब्दीली आती नहीं है बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट और हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी सोच और हमारे जज्बात, हमारे रिएक्शंस जो हैं, वो जो हमारे इमोशंस विच ड्राइव द सेम थॉट्स, everything stays the same. The biology in our neural, जो हमारा ब्रेन है, हमारी जो न्यूरो केमिस्ट्री है, जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी लाइफ जिस तरह से चल रही होती है, उस चीज के अंदर तब्दीली नहीं आती. एंड हाउ वी थिंक, हाउ वी एक्ट, हाउ वी फील, बेसिकली दैट is our personality, and our personality creates our personal reality. So did you get that? जो भी हमारी पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स एंड आवर इमोशंस. एंड हम जो भी फील कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स आवर पर्सनालिटी. और जो हमारी पर्सनालिटी है, उसके बेसिस के ऊपर वी क्रिएट आवर रियलिटी. एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज हमारी जो रियलिटी है, if we want to create a new personal reality, a new life, then we need to start thinking differently. We need to start behaving differently. We need to, we need to change. We need to change, and we need to change our subconscious. We need to change ourselves from internally. जो आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर ये होना, हम अभी इधर हैं मगर हम अपनी लाइफ से ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो देन वट एवर इट इज दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लाइफ, we need to visualize and we need to start living in that reality. And we need to start paying attention to our automatic habits and behaviors and modify everything and look and view our emotions that we live by on a daily basis. And we need to make changes to those emotions, because our emotions are connected to our past, but our past no longer serves us. And in order to move into a different future, we need to start thinking differently. So you're listening to Heart with Saima. I come to you every Thursday from 1 to 2, and I believe in टचिंग लाइव्स. जिस तरह मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर हर वक्त, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दूसरे लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है. ठीक है, गॉसिप आती है और गॉसिप हम सुनते भी हैं, और गॉसिप जब लोग आके कर भी रहे होते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी इस चीज़ के अंदर हो रहा होता है, राइट, कि किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसकी डिवोर्सेस हो रही हैं, किसकी डिवोर्सेस हुई तो ओ भाई क्या हो गया, किस चीज़ के ऊपर रिश्ता टूटा. बट लाइफ जो है, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड वाइट. लाइफ इज एक्चुअली ग्रे. अगर कोई रिश्ता खत्म भी होता है या कोई रिश्ता टूटता भी है, तो इट्स ओके. इट्स ओके बिकॉज दो लोग मिलते हैं. ये जो जिंदगी है ना, इस जिंदगी के अंदर वी आर मेंट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. वी आर मेंट टू एम्ब्रेस हैप्पीनेस. वी आर मेंट कि हम खुशियों के साथ एक्सपीरियंस करें जिंदगी को. बट इस जिंदगी में अगर दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ वो सोचते हैं, फैसला करते हैं कि ओके, यू नो व्हाट, वी विल गेट मैरिड, एंड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, देन इट्स ओके. व्हाई कीप लिविंग इन दैट स्पेस व्हिच नो लॉन्गर सर्व्स यू. कि किसने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीजें आपको दुख पहुंचा रही हैं, जो चीजें आपके लिए टॉक्सिक हैं, कि आप उसी स्पेस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार दें. Why is that so necessary? Why do we continue doing that to ourselves? Why is happiness not important to us? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. We live this life once. And when we live this life, we are meant to give it our best shot so that we can live our best life. Just because I was someone yesterday, I don't necessarily have to continue being that person throughout my life. I can become someone different. So if my brain is organized in such a way to reflect everything that we know in our life,
and our brain is a record of our past. That is an artifact of all the things that we have learned and experienced to this moment. So अगर हम रोज सुबह को उठते हैं और हम बिस्तर से निकलते हैं, सेम साइड से निकलते हैं, वो अलार्म को हम बंद करते हैं, उसी उंगली को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम बाथरूम जाते हैं, वी क्लीन आवर टीथ, वी वॉश आवर फेस, हमारा प्रोसेस जो है वो सेम है। फिर हम जाके वी गेट अ कप ऑफ टी, हम उस चाय को पीते हैं, हमारा वही मग है, हम उसी तरह वी हमारी रूटीन है, वी गेट रेडी टू वर्क, हम उसी राउट के ऊपर जाते हैं और उसी राउट के ऊपर वी ड्राइव टू वर्क एंड वी गेट टू वर्क एंड वी सी द सेम पीपल एंड वी यूज द सेम इमोशनल बटन्स जो हम डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो वो जो एक हैबिट्स हैं, वो हैबिट्स जो हैं एक हमारी आदत और हमारी रूटीन बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब काम खत्म होता है एंड हम खत्म करते हैं, हम घर पहुंचते हैं एंड वी हम अपने ईमेल्स चेक करते हैं, हम अपना जो एक हमारी रूटीन है, हम बेसिकली उस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। बट वो एक चीज को जब हम करते रहते हैं, करते रहते हैं और वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, तो वी डोंट अंडरस्टैंड, मगर वो हैबिट्स जो हैं वो हमारी एक लाइफ की रूटीन बन जाती है। और वो चीजें जो हमारी लाइफ की रूटीन बन जाती हैं, हम उन्हीं चीजों को करते रहते हैं, तो फिर चेंज किस पॉइंट के ऊपर आएगा? अगर हम वही चीजें सोचते रहेंगे तो चेंज किस पॉइंट के ऊपर आएगा? राइट? बिकॉज लाइफ में चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम इवॉल्व कर सकें। कोई चीज थी मैं कल नहीं करती होंगी, बट आज मेरा दिल कर रहा है और मैं उस चीज को एक्सपेरिमेंट करूंगी और मैं उस चीज को ट्राई करूंगी। मे बी आज मैं इस नतीजे पे पहुंचूंगी कि ये चीज वर्क नहीं कर रही या वो चीज वर्क नहीं कर रही, एंड आई continuously keep evolving and I keep the growth going. तो जिंदगी इसी तरह चल रही होती है, where we are always trying and we are trying different things and we are meant to try different things. तो ये जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। And with that, I'm going to play a song right here for you. And it is based on the fact कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Here goes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y la has sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा,